move on towards Mr. Sohail. Madni Saab, hello, assalamu alaikum. Sohail Madni Saab, how are you? Walaikum salam wa rahmatullah. I'm fine. How are you? Absolutely perfect. Thank you very much for joining us. So first things first, what we're going to do today is obviously we will request you to please share a naat with us and with our viewers in the first place, and then we will obviously have an amazing program today, because today we will be talking about the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and how he's been a beacon of hope for the entire Muslim ummah even till day and even till the day of judgment. Please go ahead, and even after that, by the way. rasool ameen khatamul mursalin rasool ameen khatamul mursalin तुसा कोई नहीं, तुसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस देखो यकीन तुसा कोई नहीं, तुसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सैयदे अव्वलीन सैयदे आखरी तुसा कोई नहीं, तुसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। मुस्तफ़ा मुजतबा तेरी मदहो सना मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुसा कोई नहीं, तुसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, जुमला साफ से खुद सजाया तुझे ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी, ऐ अज़ल के हसी, ऐ अबद के हसी तुसा कोई नहीं, तुसा कोई नहीं ऐ रसूल अमीन। Subhan Allah, Subhan Allah, Subhan Allah. Ladies and gentlemen, you know, whenever you listen to such a Naat-e Maqbool, thank you very much, Madni Sahab, first of all, for sharing such a fabulous Naat-e Maqbool with all of us.
obviously when we, whenever we recite an Atim Maqbool, it obviously talks about the characteristics of the personality of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and which is why today we gather over here. It's a special transmission. I'm going to move